Okay, so we have gone a little further in the assembly process. Kishan has already installed the magnet. ये अपना मैग्नेट है. मैग्नेट के बारे में मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में. इस तरफ क्लच भी हमने इंस्टॉल कर दिया. दिस क्लच इज़ अ कस्टम क्लच. ये जिक्सर 150 का क्लच है. सो इट इज़ द डायमीटर इज़ मोर, द स्प्रिंग्स आर हेवियर, एवरीथिंग इज़ हेवियर. इसके बारे में मैंने आई हैव स्पोकन अबाउट दिस इन सम वीडियो reel, so you can check that out and how we have made this clutch. Okay, so that is about the clutch. अभी थोड़ा हम engine घुमाते हैं. Let's see how it looks. And oh my god, yeah, looks amazing. Right now अभी अपन बात करेंगे ये मैग्नेट के बारे में. बिफोर मैग्नेट, हाँ ये, सो दिस इज़ दी न्यूट्रल वायर. तो ये इधर का अपना जो न्यूट्रल ड्रम है उधर से ये हमने वायर निकाला है. सो दिस इज़ गोना गिव द न्यूट्रल सिग्नल. जब भी द बाइक इज़ गोना बी न्यूट्रल, तो वी गोना गेट द सिग्नल फ्रॉम हियर. चार्जिंग और वो सब होगा इससे, ये वाले वायर से होगा. सो अंदर का जो कॉयल है, दी लाइट कॉयल जिसको बोलते हैं, राइट, विच यू नो चार्जेस द बैटरी एंड दी हेडलाइट और हॉर्न, जो सब इलेक्ट्रिकल पावर जो मिलता है वो इधर से ही मिलेगा. बट वी नॉट गोना कनेक्ट दी CDI इग्निशन सिस्टम ऑफ दिस. इसका इग्निशन सिस्टम होगा ECU से. सो व्हाट दिस इज़ बेसिकली इज़ अ ट्रिगर व्हील. दिस इज़ 36-1. तो मतलब ये आप गिनोगे ना तो टोटल इसका होगा 35. एक्चुअली होना चाहिए 36, राइट, बट इट इज़ 36-1. तो ये पॉइंट द सेंसर, दिस इज़ द हॉल सेंसर विच वी गोना इंस्टॉल. ये सेंस करेगा कि ओके ये मिसिंग है, सो इट्स गोना रेफरेंस दैट पॉइंट. तो फिर ECU में हम प्रोग्राम करेंगे कि ये रेफरेंस से इतना डिग्री पे यू हैव टू फायर सिलेंडर नंबर 1. सपोज हमने सिलेंडर नंबर 1 इसको डिसाइड किया. सो वेन एवर दिस सिलेंडर गोज ऑन टॉप, तो इट्स गोना फायर. फिर ये पॉइंट से वी वांट टू फायर दिस सिलेंडर एट 180 डिग्री. सो नाउ द क्रैंक इज गोना रोटेट 180 डिग्रीज एंड बूम, अभी नंबर 2 फायर होगा. ऐसे पूरा साइकिल चलते जाएगा. सो ECU में वी कैन प्रोग्राम मोर, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा. बट नाउ लेट्स सी हाउ वी गोना इंस्टॉल दिस. अभी ये जो मैग्नेट है ये है फैक्ट्री मैग्नेट ही है. इफ़ यू चेक आउट वन ऑफ द रील्स, तो ये वी हैव मेड दिस रिंग, और इसके ऊपर फिर हमने ये रिंग खाली वी हैव फिटेड. इट्स नॉट वेल्डेड और एनीथिंग. यू कैन चेक आउट द वीडियो. ये रिंग हमने गर्म किया था. ये जो अंदर का मैग्नेट है उसको एकदम सुपर कूल किया था ड्राई आइस से. सो द मैग्नेट श्रंक, और हमने टॉलरेंसेस ऐसे सेट किए थे दैट वी कैन स्लाइड इट इन, एंड देन व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर आएगा तब एकदम 0 वो इट विल बिकम अ 1 यूनिट. सो यू कैन सी इट इज़ लाइक वेरी स्नग. अगर इसको मैं हैमर से ठोकूंगा, कुछ भी करूँगा, इट्स नॉट गोना कम आउट. So it's very nicely done. Now let me put the cover, the magnet cover on, and show you how everything looks. Right, we're just gonna put a couple of fasteners. So अभी आप इधर से you can see the trigger wheel, right? तो इसके ऊपर we have to put we have made this unit which is a perfect fit like this. तो ये सेंसर को हाउस करेगा, राइट. तो अभी ये सेंसर ऐसे लगेगा इस पे, राइट, एंड द सेंसर इज गोना सेंस द टीथ, और इसके हिसाब से वी गोना गेट द सिग्नल फ्रॉम द हॉल सेंसर, एंड then we gonna program it on the ECU. अभी ये हो गया. Now we gonna install the block. We have the block ready over here, right? If you come and have a look,
at the block, ये actually हमने we have shaved off. So the fins, there were like extra fins. मगर ये because you know the engines have now you know come together, we had to shave off. So थोड़ा हमने ये जो राइट वाला इंजन है, ये लेफ्ट वाला इंजन, उससे थोड़ा थोड़ा यू नो वी हैव शेप्ड इट ऑफ. किशन इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द ब्लॉक. यू कैन सी the new reed valve. It's a 3-petal reed valve. It's nicely packed, everything is done nicely. This is a 5 mm, right? This is a 5 mm reed valve plate जो अभी you know if any one of you, if you are ordering the AX100 port job from us, तो अगर आप पोर्टिंग करवाते हो हमसे तो you get this 5 mm plate along with the 4 mm plate that we gonna install in this one, right? Yeah, so that's how it looks. It looks really beautiful. So now we just gonna install this, and I'll take you along with the process of installing. But before that, you know, I have to make this look like a machine finish. तो ये हम थोड़ा पाउडर कोट अभी निकालेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, and then we gonna prep the frame up, और फिर हम you know we gonna put the engine along with the block in the frame. फिर head और वो सब अपन बाद में लगाएंगे. So let me just prep the block. We going further with the assembly. Engine is half assembled. तो अभी हम क्या करेंगे कि engine को डालेंगे frame के अंदर. So you can see the frame. The front fork is ready. The rear end is ready. We have these mounts. ये किशन ने डिज़ाइन किया है, वो ये वाले mounts. So I will show you know how these go. तो earlier you know the frame was whole. ये पूरा ऐसे connection था. But now you know we chopped it off because the engine is actually you know coming here. तो अगर frame होती तो engine अंदर नीचे बैठता नहीं. So we chopped it off and we have made these inserts, और इस पे ये ऐसे fit होगा. So we'll show you. So you know this is gonna take the stresses of the frame. ठीक है, ऐसे लगेगा तो फ्रेम पे जो स्ट्रेस आएगा वो इस पे जाएगा, and the engine is gonna be sitting over here. Right, now I'm just gonna put the camera on the side. So he's always there. He also loves bikes, cars, so he's always hanging out. Anyway, yeah, piston और वो सब हम बाद में assemble करेंगे. So first only this engine is going in, so it's a little light and easier for us to assemble. Sit. Go. तो आप देख सकते हो how the engine fits. This is the factory mount. ये factory वाला mount है. तो what we have done is we have designed these spacers. तो इधर सब spacers लगेंगे. फिर ये वाला mount is custom made, right? और फिर नीचे there will be the aluminum mount that I just showed you, right? So let us fit the mount and then I will show you further. Hey. Yeah.
So the engine is mounted. हमने engine mount कर दिया है. You can see the spacers. These are the spacers. पीछे का mount is like so. This is also a spacer over here. But the main mount is this one. Right. So this is a stress member. तो ये एक stress member की तरह act करेगा. Both the sides is the same, so you can see it over here as well. Yeah, so we just gonna fasten this, then we're gonna carry on with more assembly. એટલે તકલીફ પડે થોડી ભણવા દો નહીં થઈ જાય. બ્રો what the fuck bro અટકી ચમનું જાય નીચે આવી જશે મારો ભાઈ. So the engine is installed. We have also installed the blocks, so it's looking beautiful. If अगर किशन engine घुमाएगा तो आपको दिखेगा how these pistons are going up and down and they are 180 degrees apart. Amazing. So next step अभी हमारा ये होगा कि we gonna fit the heads. हम head लगाएंगे फिर we want to tune it. So we gonna put a gauge inside and exact हमारे पास degree wheel है तो exact कितना what is the exact degree between the two TDCs. So we're gonna find that out and then probably I think the next step is to fit the carb and run the engine. The ECU is connected और ECU में से मेन 3 लीड्स जा रही है, मतलब 2 जा रही है, 1 आ रही है. सो देयर आर 3 वायर्स. तो लेट मी एक्सप्लेन यू वो वायर्स क्या क्या है. एक है हॉल सेंसर का, विच इज़ इंजन पोजीशन सेंसर. उसका फीड इज़ गोइंग इनटू द ECU. देन दूसरे 2 वायर है वो है COP मतलब कॉइल ऑन प्लग्स. वी आर यूजिंग दिस ऑल्टो K10 कॉइल्स, मगर ये ऐसे नहीं रहेगी, बाद में हम चेंज कर देंगे. वी विल टक इट इन द टैंक और समवेयर, सो इट्स गोना बी हिडन. This is the setup right now. We already started the bike once. We are still tuning it. We are gathering some data. So last time the bike was running on 18 mm carburetors, जो factory का जो carburetor है वो. Now we are running 22 mm carburetors. Obviously because this is ported. ये जो block है वो ported है. It is breathing more, everything is more, so it needs a little bit more air and fuel. So इसलिए we are running bigger carburetors. Now we want to tune the bike ignition wise completely. So that's why we have the degree wheel. So once we are done with the tuning, we gonna remove this degree wheel. फिर ये जो मार्किंग है वो भी हम निकाल देंगे. एंड देन वी गोना फिट द क्लच एंड एवरीथिंग.
So before we fit the clutch और ये degree wheel हम निकाल दे, we just want to get done with the tuning, right? So these are the few changes that we have made, with the carburetor, a little bit tuning the ECU. Then Kishan is also fixing the hall sensor. So usme, he's doing some work. So we'll see, how the bike runs with these small changes. I'm gonna keep the camera on so you can see, what kind of work we are doing. So let me just put the camera here. थोड़ा काम पचास थोड़ी ज्यादा है વાંધો નહીં, પેકઅપ કરીશું હવે કિશન. હજી એક વાર ટ્રાય કરી માર કિશન કિક. તમે મારો તું મારો ટાંટિયો તૂટેલો છે બકા. તું માર, હું બેટરી પકડું છું.